So it is the first day since we decided there would be a fine for being late. So first day I'll give people a little bit of relief, and nobody will pay a fine today because they're here. Now some people will come even later, I think. Maybe they will have to pay a fine. Hmm. Guys, what are we gonna do? We are gonna read the text about Columbus, page number 110. Let's read, everyone. Please come in. You are coming with a smile, knowing very well that you are late. But the good news is today, everybody will be exempted. Okay. People don't have to pay a fine today. But from tomorrow, yes, try and be on time. Yeah. 7:05 latest. Let's read together. Christopher Columbus was a great explorer. He was a great explorer. Explorer is somebody who explores. Dancer is somebody who dances. A teacher is someone who teaches. So an explorer is someone who explores. To explore means to search for something new. Explore. Yes. I have taught the word explore. I will teach you the word one more time. Explore. You go to a park for the first time. You go there and you sit under a tree or on a bench and eat peanuts. After half an hour or 1 hour, you come out. Did you explore the park? You didn't. The park is big. There are different parts. There are different trees, plants, flowers, trees, and if you go to different parts of the park and see what is there, then that is called exploring. So maybe you are in a park for the first time and you're walking around. A friend calls you, "Where are you?" "I'm in a park." Oh, what are you doing? Just exploring. Exploring the park. Exploring the park. Just exploring. So explore is a common verb now, you understand? Explore, to search for new things. Okay. And the idea of dating. Yeah, people, boys and girls meet each other and go on dates. What's the idea behind dating? Why do they date? They are trying to explore each other's personality. During these dates, they try to explore each other's personality. They learn about each other, what kind of people they are, right? So explore it. Dating gives you a chance. Dating gives you an opportunity to explore each other's personality, because nowadays people don't want to be married to strangers. In the past, it was a common thing to be married to strangers and explore each other's personality after marriage. But nowadays people say, what's the point of exploring each other's personality after marriage? You don't have a choice. You'll have to go through divorce if you don't like each other. That's a lot of hassle and pain. Better explore each other's personality before marriage and be sure you want to be with this person. You go on 5, 6 dates with somebody and then you discover something about the other person's personality that you decide, nah, I don't want to be with this person. And you stop seeing them. And you go on dates with somebody and then you keep exploring each other's personality and you keep getting to learn new things, good things that you like about their personality. You feel more and more attracted. And then you decide, okay, we want to settle down together.
He was a great explorer. We are all explorers in our own ways. He explored places, lands, countries. We are also exploring, but we are exploring very different things. As long as we live in my philosophical way, we are all exploring. We are trying to learn something new. We expect something new, subconsciously or consciously. And if there is no desire or hope for finding something new, there is no point in living. Okay, explorer. He was a great explorer. For a long time, people believed that he discovered America. People gave him credit. Oh, Columbus discovered America. Columbus discovered America. For a long time, people believed that the earth was flat. For a long time, people believed the earth was static and the sun went around the earth. For a long time, people believed that Biharis can't speak English. Just kidding. All right. And nobody's thought that way. It is a perception that Biharis don't speak good English, but it's not that Biharis can't speak good English. Most Biharis don't speak good English. Okay. People believed that solar eclipse and lunar eclipses, solar eclipses and lunar eclipses are divine phenomenas, or phenomena, whatever. See, I would like to tell you, there are some words. Phenomenon is the singular traditionally, and phenomena is the plural. Phenomenon is singular, and phenomena is the plural. But nowadays, people use phenomenas, okay? Phenomena itself is a plural, but still people use phenomenas, okay? And phenomena as a singular. Some people use phenomenon as a singular and phenomenons as plural. But to be correct, you need to know phenomenon is singular in an exam and phenomena is plural. So solar eclipses and lunar eclipses are divine phenomena. This is what people believe for a long time. Okay. God got angry with me. Oh, beta, you're talking about me. Here is the punishment. We will not give you electricity. Rot in the heat. Okay, take the challenge. I have inverter. Okay. However, however, we now know, however, however means but. Literally, it means but. It's another thing that the part of a speech is different. However, starts a sentence, as you can see. Okay, capital H. However, if you give a comma after America, then you will use but, no problems. However, sounds a little formal. So you often use it in essays. Okay. However, we now know, now we know, in the past we didn't know. We now know that the Norseman, Leif Erikson, landed there 500 years before Columbus. There refers to, there refers to, there refers to, there cannot be Columbus. There must be a place. There is a place now. We now know that Leif Erikson landed in America 500 years before Columbus. But still, somehow, Columbus got the credit for discovering America. History is full of such misconceptions, misinformation. Early life.
Columbus was born in 1451 in Genoa, Italy. Everybody remembers that structure, was born, right? Columbus was born in 1451 in Genoa, Italy. Okay, 1451, 600, 500, 80 years ago, nearly. He was one of five children. He had four siblings. He didn't go to school. He didn't go to school. He worked with his father, which was typical, right? I told you that back then people didn't go to study. They didn't go to school. It was not necessary. They went to their father's shop where the father worked, and they learned their father's craft and carried on earning their living. He was one of five children. He didn't go to school. He worked with his father, who was a wool worker. However, however, he always wanted to go to sea. See the use of however. But he worked as a wool worker, like his father, with his father. But that was not the job he wanted to do. He always wanted to go to sea, go to sea, go to sea. Beach pe jana or go to sea, same nahi hai. He wanted to go to sea. He wanted to be a sailor. Go to sea matlab to be a sailor, जो ship पे होता है. Go to sea. Underline the phrase. No article needed. Go to sea. आप स्टडी करोगे रूल्स में कि ज्योग्राफिक एंटिटीज ऐसे होते हैं जैसे रिवर्स, माउंटेन्स, यू नो, ओशंस, सीज, इनके पहले द लगाते हैं. द स्काई, द सी, ऑलराइट, द अर्थ, द माउंटेन, ऐसे. लेकिन यहाँ क्या लिखा है? गो टू सी. तो तीन वर्ड्स का फ्रेज याद रखना. गो टू सी. I want to go to sea. It means I want to be a sailor. It means I want to be a sailor. I want to be on a ship. He always wanted to go to sea. He had a passion for being a sailor. Now, the next topic title is Life at Sea. Life at Sea. Again, no article there. Life at Sea. He became a sailor. He wanted to be a sailor. He became a sailor. Between 1477 and 1485. Between 1477 and 1485. During 8 years, right? Between 1477 and 1485 means during 8 years, he visited many countries. He visited many countries, including Spain, Iceland, Ireland, Madeira, and West Africa. He visited many countries, including these countries. How many countries' names are written? 5. Spain, Iceland, Ireland, Madeira, and West Africa. Now, my question is, did he visit 5 countries or more? He visited more. Because he visited many countries, including these. He did not visit only these countries. Number 3, and he learned to read and write Spanish. He learned to read and write Spanish during his early travels. So between 1477 and 1485, during these 8 years, when he traveled to many different countries, he also learned to read and write Spanish. He was Italian, guys, so he could speak Italian, right? He could read Italian, he could write Italian. But during his early travels, he learned to read and write Spanish. Columbus wanted to be rich and famous. He was an ambitious person. He wanted to be rich and he wanted to be famous. Normally, those people who want to be rich and famous don't mind doing a few bad things in order to be rich, in order to be famous. Normally, those who have a very desperate desire to be rich and famous, they don't mind
taking shortcuts, the wrong paths. There are so many examples of people who wanted to be rich faster, sooner, and they opted for the shortcut. And the shortcut is usually not the right path. Smuggling, you become rich quickly. If you start a shop, it will take you time to be rich. You start smuggling. If your luck supports you even a little bit, you'll be rich very soon. But again, it's not morally correct. And it's illegal as well, isn't it? You get punished if you get caught. Columbus wanted to be rich and famous. For 8 years, what did he do for 8 years? He begged King Ferdinand and Queen Isabella of Spain to give him money to discover new lands. New lands. Give this sentence to anybody preparing for a competitive exam and ask them to spot an error. And they will say, hey, we can't say lands. Land is an uncountable noun. कटोरा छाप नॉलेज एक लाइन रट लो कहो कि हम दुनिया जान गए दुनिया गोल है सुन लिए तो हम दुनिया के बारे में सब कुछ जान गए क्या जान गए दुनिया गोल है That's so silly, isn't it? So उस तरह के क्लासेस में बैठ के आप उतना ही याद कर सकते जो याद कराया गया आप कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप करोगे तो द सेंटेंस इज बेटा he wanted to discover new lands and for that he wanted money from the king of Spain, the king and queen of Spain. He begged them, please give me money. I want to go and discover new lands. New lands means what here? Naya naya zameen. So, nayi jagah, naye desh, right? So land is a countable noun when it means countries. All right. But when you talk about land as zameen, then how can you count zameen? Then land is uncountable. So for the basic meaning of land, land is an uncountable noun. Okay. Human beings live on land. Fish don't live on land, they live in water. So in this case, water and land both are uncountable nouns. But land means also desh, okay? He wanted to discover new lands. Okay, totally correct English. Grammatically, absolutely fine. But like I said, आप ये सेंटेंस ले जाके दीजिए किसी भी क्लास में जहां जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी हो रही है क्लास में ले जाके रखिए ये एक सेंटेंस है फाइंड द एरर्स not only the students in a lot of cases the teacher will also underline the lands part and will say it is an error because वो teacher है कौन पता है उन्हीं में से एक जो सर थोड़ा पहले से स्टार्ट करा ठीक है unfortunately in general competition classes you don't find anybody who knows English deeply they are not there they're not working there very few of them now that there is a lot of money in teaching competitive batches if you checked maybe 20 25 years ago there weren't so many students preparing for general competition there used to be 20 30 students in one class at best 50 students okay but nowadays 1,000 students is considered normal in a competitive class even in Bihar Shift, there are teachers who have 1,000 students sitting in their class and they are teaching for SSC or banking or other exams, okay, in D and all. So there, of course, English plays a role, big role. So they have teachers and unfortunately, majority of them are notes ke pujari. Okay, they do not have understanding of English. They have notes and they teach through the notes. Examples are written in the notes. और उसी बेस पे कुछ नया सेंटेंस बना तो उसका जवाब आएगा कॉन्ट्राडिक्ट करो उनके नोट्स के बातों को और ऑलमोस्ट एवरी रूल can be challenged
because English is just a language. Okay. So when you study rules, there are so many variations of the rules. Sometimes there are so many exceptions to the rules, and the teachers will be all at sea. Uh, they will be absolutely confused. Okay. Um, let's see. They will be at the end of they will be at their wits end. It's an expression, at their wits end, मतलब totally कुछ समझ नहीं आया क्या जवाब दे. जैसे मैंने अभी बताया, ये lands, वो फटाक से बोल देंगे. 9 out of 10 teachers that you have in your trip teaching competitive classes. मेरे कोई स्टूडेंट ये नहीं कर रहा, क्या कहते हैं उसको, रिपोर्टिंग नहीं कर रहा. नहीं तो ये सब अच्छा मुद्दा होता है क्लास में जाकर रिपोर्टिंग करने का. भाई एक्सपोज करो कि क्या हो रहा है. ठीक है, आप कॉमन एरर पकड़ना सिखा रहे हो ना, नाउन प्रोनाउन सिखा रहे हो ना, चलो ठीक है भाई. Look at this sentence. Easy sentence. He begged for money to discover new lands. Where is the error? Okay. फटाक से lands लिखा है, इसमें error होगा. Lands means countries. Countable clearly. Finally, so for 8 years he begged. Now this tells you a little bit about his personality. What do you realize from this sentence about his personality? Was he a determined person? Once he decided to do something, he just went all out, full dedication for his, whatever he decided to do. Or he quickly changed his mind. He was a fickle person. What do you think? Very determined. For 8 years, 8 years is a long time. After 1 or 2 years, he could have said, all right, let's give up. The king is not, coming around. Okay, so let's forget it. Okay. But he continued for 8 years. And obviously, finally, they agreed. They agreed. They refers to the king and the queen. The king and the queen. They, plural. They agreed. Finally, they agreed. Agreed, past tense of agree, verb. फिर भी लोग बोलते रहते हैं आई एम अग्री, आई एम अग्री. वर्ब का V2 क्या है? अग्रीड, यानी अग्री वर्ब है. फिर भी बोलते हैं आई एम अग्री. कभी नहीं बोलते आई एम गो, आई एम ईट, लेकिन आई एम अग्री. अग्री इज अ वर्ब. Agree is it is not an adjective. In Hindi, the word सहमत is not agree. सहमत is an adjective. मैं सहमत हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं उदास हूं, मैं सहमत हूं. तो उदास, प्रसन्न, सहमत, all are adjectives. मैं हूं, आप उदास हैं, आप प्रसन्न हैं, आप सहमत हैं. क्या आप उदास हैं, क्या आप प्रसन्न हैं, क्या आप सहमत हैं? These are all adjectives, right? So you can say, are you happy? Are you sad? Are you agree? Nahi, because agree is not happy. Agree is not sad. Happy and sad are adjectives. Agree is a verb. So to say kya aap sehmat hain, in English you'll have to say, do you agree? Because it's a verb. What do you say? Do you go or are you go? Do you play or are you play? Do you smoke or are you smoke? Do you drink? Are you drink? Do you agree? Got it? Now it is up to you to remember this. If in 1 week's time you forget this lesson and start saying, are you agree? Then we will understand that this pot will never come, be fully filled because it has a hole in it. If you forget this in 1 week's time, 2 weeks' time, and it happens with some students, because of lack of revision, because of lack of focus in the class, they're not listening, it happens. I hope you guys will not forget. So finally they agreed. And he got 3 ships. He got 3 ships. The Santa Maria, the Pinta, and the Nina. He got 3 ships. Read the sentence. Finally, they agreed.
After that wait of 8 years, right? Finally, they agreed. And Columbus got 3 ships, the Santa Maria, the Pinta, and the Nina. इस सेंटेंस को पढ़ के आर्टिकल का कौन सा रूल समझ में आता है? आर्टिकल द का कौन सा रूल समझ में आता है? कुछ आता है? आप अपने मन से तो नहीं किए होंगे, मेरे बोलने के बाद आप गौर करोगे। नहीं, गलत बोल रही हो आप सैम। आर्टिकल का कौन सा रूल आपको यहां से सीखने को मिलता है? प्लीज लेट्स सी, आई होप कि आप फिगर आउट कर लोगे। जल्दी बताओ भाई। व्हेन यू रीड दिस सेंटेंस, आपको बिना किसी टीचर के एक रूल समझ में आ जाना चाहिए। अभी खाली सेंटेंस बताओ वो कौन सा रूल है? बोलो क्या? बोलो बेटा रानी। नाम के पहले द लगाते, यही रूल है ना बेटा? शिप के नाम के पहले द लगाते हैं। संता मरिया के पहले द लगा है। पिन नहीं, इतना खाली नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए शिप के नाम के पहले द लगाना चाहिए, है ना बेटा? द टाइटैनिक। ओके, शिप के नाम के पहले द लगाते हैं, लिखा है ना? देखो, तीनों 3 नाम है ना शिप्स के, तीनों में द लगाया। इससे नहीं सामने से महसूस हुआ हमें? नहीं, अगर हुआ तो इसकी एक वजह है। हमें आदत पड़ी हो कोई और हमारे मुंह में चम्मच से खाना डाल दे, हम चम्मच उठा के खाना नहीं डाल पाते, आदत नहीं है हमें। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, राइट? मोटर स्किल डेवलप होता है तो चम्मच से हाथ ऐसे उठा के मुंह में डालते हैं। अगर कभी बचपन से ना खाने दिया जाए तो आप बड़े होने के बाद ऐसे चम्मच से नहीं खा पाओगे, हिल जाएगा, गिर जाएगा, बहुत कुछ होगा, राइट? Imagine this, that all your childhood, your mother feeds you, never allows you to eat using your own hands. Okay? In that case, you will never develop this skill. Similarly, when you go to an English class in your early childhood, they start giving you things to remember. आज ये 10 वर्ड याद करके आना, आज ये टेंस पढ़ा दिए, ये समझ में आ गया, ऐसे करके। उससे क्या होता है कि आप ना अपना दिमाग लगाना बंद कर देते हैं बहुत। अगर आप रूल्स के जगह सेंटेंसेस सुने और उसका मतलब अंदाजा लगाए कॉन्टेक्स्ट से, तो आपको दिमाग यूज करने की आदत पड़ेगी। जो बात इसने कही, तुमने ये बात कही कि शिप्स के नाम के पहले द लगाना चाहिए, नहीं कह पाई ना? पता है क्यों नहीं कह पाई? बस दिखा नहीं, वो सामने है, अब दिख रहा है। द संता मरिया, द निन्या, द पिंता। कहा नहीं लिखा है द संता मरिया पिंटा एंड निन्या? ऐसा होता तो नहीं रूल बनता अपने दिमाग में। बट वी सी 3 times द। तो क्या ये तुमने यहां से गौर किया रानी, या पहले से पढ़ा था इसलिए बोला तुमने? बहुत बढ़िया। तो कुछ लोग पढ़ लेते हैं रूल्स, है ना, कि इस चीज के पहले द लगाते, उस चीज के पहले द लगाते। कितने याद रखोगे? ये सामने से आया द संता मरिया, तो ये आसान रहेगा, क्योंकि कोई रूल नहीं याद रखने के लिए, सामने से सेंटेंस था कि कोलंबस गॉट 3 ships। अब शायद ये ऐसी बात है जो बहुत दिन तक दिमाग में रहेगी, क्योंकि एक स्टोरी है। मुझे बताओ, स्टोरी याद रखना आसान होता है कि रैंडम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना? तो आई टीच ऑल इंग्लिश ग्रामर इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज। Every rule of English grammar I teach in the form of stories, because stories are always easier to remember than just any random information. एक स्टोरी में 6-7 नाम आए, ठीक है? कहानी सुनाई, 6-7 नाम आए, ठीक? अब वो 6-7 नाम ऐसे अलग लिस्ट में लिख कर दे दिया जाए, ठीक है? 15 दिन बाद एक ने एक स्टोरी सुनी, एक बार 5-6 नाम उसमें थे, और दूसरे ने एक बार वो लिस्ट पढ़ा जिसमें 5-6 नाम थे। 15 दिन बाद कौन इंसान ज्यादा नाम याद रख पाएगा? स्टोरी वाला। तो मेरा क्लास का नाम होना चाहिए स्टोरी वाला। स्टोरी वाला इंग्लिश क्लासेस, ठीक है? अगर मैंने कभी अपने क्लास को नया नाम दिया तो क्या नाम दूंगा? स्टोरी वाला इंग्लिश क्लासेस, because that's what I do sitting here. I just tell stories about English and in English. So beta, rule is in front of you. You just needed to see it.
We use the before names of ships. He got 3 ships, beta. He got 3 ships. And enough food. And enough food for a voyage of 1 year. Enough food. Beta, enough always has a condition. Enough for something, enough to do something. For example, enough money. So enough money to buy a house is maybe 5 lakh, 6 lakh, 10 lakh rupees. But enough money to buy a plate of chow mein is only 100 or 200 rupees. And enough money to buy a pencil is only 5 rupees. So enough doesn't have a meaning. Enough for, then there must be a context. Enough to do what? So he got enough food for a voyage of 1 year. So much food that will last for 1 year. For a voyage. What is a voyage? A voyage is a journey if you look at the context here. A voyage is a journey. A sea journey is called a voyage. The Titanic sank on its first voyage, no? The Titanic sank during its first voyage. The first voyage is called maiden voyage. Okay. Voyage is a journey. First is called maiden. Maiden century, first century. In cricket, it is a very common word. He scored his maiden century, means first century. Okay. Anyways, voyage means beta, a journey. A sea journey is called a voyage. He got enough food from the king, 3 ships, and one more thing. Enough food for a voyage of 1 year. 1 year. For a voyage of 1 year. He left Spain on the 3rd of August. So after taking all these things, after getting these things from the king, he left Spain on the 3rd of August. You know how to read dates? 3 August or the 3rd of August? The 3rd of August, right? August the 3rd. August the 3rd. He left Spain on August the 3rd, 1492. 1492. He was 41 years old, guys. He was born in 51. And he went on this important voyage in 1492 when he was 41 years of age and sailed west, beta. He sailed. Those days, people did not sail west. They always sailed east. All the countries like India, China, they were closer if you sailed east. I would like to show you guys the globe, okay? So that you can understand this idea. It's something that I got to know, not from here, somewhere else I read, that back then, I read a lot about Columbus, and that's why I was saying the other day, Columbus was a great explorer, but he wasn't a very nice man from today's standards. He was a murderer, a mass murderer. Not 1 or 2 people he killed because he didn't like them. No. He had problems with them. No. He killed lots of people because they did not agree with his religious beliefs. He was behind a lot of people's killings because he was spreading Christianity. And those Kabila people, tribal people, they were happy in their life with their own religion, but they were forced to take this religion, accept this religion. Some of them were not very keen on it. They were not ready. They had to die. Now think of somebody like that today. Somebody who forces you to change your religion. And when you disagree, then he orders for your killing. Is that a good person today? From today's standards, will you consider that person a good person today? So today, morality has a high standard.
very high standard. A lot of things have changed today. A lot of things are considered wrong today. Those things which were considered okay earlier, right? Today, those things are not considered okay. On the other hand, there are a few things which were considered taboo in the past and they are okay today. For example, two women being married and living together. In a lot of societies, it's okay today. They have legitimized it. They have given it legal, sanction that yes, you can be married. Same-sex marriage is okay in Australia, in Canada, in many other countries. They allow same-sex marriage. It was never acceptable in the past. It was a big taboo. So human morality has gone through a big change. What was bad in the past is okay now, and what was okay in the past is bad now. A lot of traditional people still stay with the old morality. They say, no, no, past was good. Today is bad. That's the difference between progressive and regressive thinking. Regressive, looking back and thinking, oh, it was good. We want to go back. We want to go back. Past was better. Progressive, no, there were problems in the past. This is better. So there are people who are progressive and there are people who are regressive. Regressive is normally used negatively. Progressive is used positively. Even though you are regressive, you don't want to accept you are regressive. You don't want to use the negative word for yourself. If you think the past was better, where people were killed when they did not change their religion, if you think past was better, where gay people and lesbians were killed if they showed their identity in public, if they revealed their sexual preference in public, they were killed in the past. If you think that was better, then you are definitely regressive. Because there is no excuse. भाई हम बाकी की तरह दिखते हैं, तुम अलग दिखते हो, तुम खराब हो. हमारे लिए आसान है ना, हम बाकी की तरह दिखते हैं, तो हम तो अब बोल सकते हैं तुम खराब हो. That was the main funda of the past. Do not recognize those who are different. Don't give them equal status in society who are different. Let me give you examples. People who write with left hand, people who predominantly use their left hand, they were considered bad people. If a child, that this is totally natural. Some people are born with predominantly right hand, and some people are born with predominant left hand. Predominant left hand, they use their left hand more, like Amitabh Bachchan. Okay, but if Amitabh Bachchan was born or had been born 500 years ago, he would have been considered a bad person. Because in the past, people with a predominant left hand were considered evil. बुरे होते हैं वो लोग. They were considered evil. Parents used to beat those children to stop using their left hand. Even today, some people do the same because मैंने कहा ना अभी भी असर गया नहीं है. Education has not penetrated every nook and corner of the world. There are some parents who still hit their children for using their left hand. There are vocabulary items in English which will tell you that left-handed people were considered bad, evil. तो जितनी जानकारी होगी आपको पास्ट के बारे में, आप आज की दुनिया देख रहे हो, अब पास्ट के ग्लोरी सुनते हो. क्या सुनते हो? ग्लोरी सुनते हो. पास्ट में ऐसा था रामराज. ओके, ठीक है. तो आपको क्या हमेशा फैसिनेशन रहेगा? इतनी परेशानियां, पास्ट वाज बेटर. लैक ऑफ नॉलेज, simply. But if you learn about history, how life was just 400-500 years ago, 600-700 years ago, 1,000 years ago, then you will realize how much better life is today. Okay, moving on.
He left Spain on the 3rd of August, 1492 and sailed west, beta. Sailed west. He did not sail east, which was the common choice of sailors back then. He took a risk. He said, no, I will go west. I will sail west. He decided to sail west. Most people sailed east back then. I wanted to show you on the map, on the globe, sailing east and sailing west from um Spain. First of all, I need to go to, what is that thing called? Which Earth? Google Earth. Google Earth. Yeah. And we want to find Spain, first of all, here. Guys, come here, take a look. Because I cannot show you this screen. I can't turn the screen towards you. So please, you come here and take a look. Come around. Come around. Yeah. This is Spain here. Lazy people. What are you waiting for? This is Spain, guys. This is the capital of Spain, Madrid. Madrid, not Madrid. Madrid. Okay, in English, Madrid. Okay. And this is Africa here. And if you keep going, this is India. So all the countries are in the east. Can you see from Spain? Can you see? All the countries are towards the east. See? So back then, people always traveled east from Spain, here, this way. And they reached all these countries. But he decided to sail west. And see here, when you go west, see the problem. Long gap, no lands. This is the North Atlantic Ocean, huge ocean. Back then, everybody traveled east. And the countries were nearby, all the other countries, it was easy. But he decided to sail west. I hope you understood. Let's see. He decided to sail west. After 3 months at sea, which sea? North Atlantic Sea, North Atlantic Ocean, right? After 3 months at sea, number 5, his sailors became tired and ill because they had never traveled for such a long time. They were continuously going and going on water, right? They had no idea when they were going to find land because it was a new direction, new path, you see. So they started feeling tired and ill, and it is common. This is called seasickness. When you spend a lot of time at sea, then you start to feel tired. Yeah, you become sick. Seasickness, it is called. You start vomiting, your head starts, hurting. So many things happen. Science explains why these things happen. Anyways, after 3 months at sea, his sailors became tired and ill. They wanted to go home. They who? His sailors. His sailors. Don't say sailors. Sailors means दुनिया के sailors, सारे sailors. His sailors. यही फर्क है English में और हिंदी में. Okay? In English, we will say here, his sailors. Columbus says sailors. The sailors on his ship. They wanted to go home. Give me just 3 more days, said Columbus. He said, okay, fine, you want to go home, I understand. But just give me 3 more days. If nothing happens, we will go home. Just give me 3 more days. There is a story why he said, give me just 3 more days. It was very clever. He had seen some birds and he had an idea where those birds are found. And he knew that there would be some people around. Okay.
So he said, just give me 3 more days. Very interesting story it is. Said Columbus, just give me 3 more days. 2 days later, 2 दिन बाद, they saw land. How clever he was. He said, just give me 3 more days. And 2 days later, he saw land. Now I have a question. 2 days later means kab se 2 days? Two days later. 2 days kab se? Kahan se 2 days? है ना? When he said, give me 3 more days. उसके बाद जिस दिन बोला give me 3 more days, 2 days later, वहां से 2 दिन बाद, तो हमेशा later past tense में यूज होगा. ओके एक रेफरेंस पॉइंट होगा एंड वहां से they got married in 2009. 2 years later they had their first baby. पता चल गया कब से? 2 साल बाद. अगर मैं 2009 ना बोलूं, बोलूं they got married and 2 years later they had a baby, तो भी पता है 2 साल कब से? After marriage. Since their marriage, 2 years since their marriage. So 2 years later they had a baby. Okay, next. So 2 days later they saw land. It was an island. It was an island, surrounded by water, a small piece of land. It was an island. They saw land. वो land क्या था भाई? It was an island. It was an island. पहचानवाने के लिए it का use करते हैं. It was an island. It was not a country. It was an island. Okay. 6. Columbus named it San Salvador and its people Indians. अब ये सैन सैल्वाडोर क्या है भाई? ठीक है, बट व्हाई डिड ही नेम इट सैन सैल्वाडोर? इसकी कहानी होगी ना. व्हाई डिड ही नॉट नेम इट विनय शंकर सोनी? व्हाई डिड ही नेम द आइलैंड सैन सैल्वाडोर? रिलीजन. आप आओ किसी दूसरे के देश और उसको नाम क्या दे दो? अपने घर के किसी बुजुर्ग का. ये कैसा समझदारी है? उसका अपना नाम होगा ना, उसको कहीं नहीं एक्सेप्ट किया तुमने. कोई मेरे घर आए, मेरा नाम क्या नाम है आपका? विनय सिंह. अच्छा, आज से आपका नाम फलना बाबू है. का है भाई? कौन है तू? टोल्ड यू कि बहुत से ऐसे चीजें हैं जो आपको अखरेंगे अगर आप समझदारी से सोचोगे तो. व्हाई डिड दे हैव टू डू इट? व्हाई डिड दे हैव टू गिव अस अ नेम इंडिया? Why didn't they accept our name, the name that we had? But anyways, तो बेटा समझने का एंगल है, सोचने का एंगल है. आपको कैसा लगता है सोचना ऐसे? It is up to you, your personality, Some people were, देखो बेटा, a time will come. I'm talking about geopolitics. Okay, America is considered a superpower. It is possible, beta, without a war, okay? With all their 4,000 nuclear weapons that they have, 4,000 nuclear bombs they have, they will be kept in their stock reserve. There will be no war, and America will become a very weak country. It is possible. And it might happen in 50 years, 100 years' time. America will lose its place as the superpower. It's very much possible. The thing is, when you are powerful, what do you do? How do you behave when you are powerful? You are the most powerful person in your neighborhood. How do you behave with your neighbors? That will, to a certain extent, determine how long you enjoy that power. If you start behaving irrationally, the wrong way, unfairly with your neighbors, then your power is not going to stay for too long. You'll soon lose it. If you use that power to do good things for other people, perhaps that power will last longer. Why did he have to name the island San Salvador? And its people Indians? आप भी हो Indians, और वो भी, उनका भी नाम क्या दिया गया? देखो Indians को in the picture.
कबीलाई पीपल, ट्राइबल पीपल, वो हम लोग को भी ऐसे ही समझ रहे थे. When they came here, they called our country India and us Indians. It was it was just to show disrespect. एक आदमी ने बताया था ना कि इंडिया वर्ड गाली बनाया था उन्होंने, और इंडियंस गाली हम लोग के लिए. तो कुछ लोग आ गए ध्रुव राठी जैसे के बताने के लिए कि नहीं है, गाली नहीं है. वो बहुत बड़ा ये है. He is not an honest person. That's the only problem with him. He is a very knowledgeable person, but he is not honest. जब भी कुछ ऐसी बात आती है तो वो आइडियोलॉजी के पीछे छुप के उसको डिफेंड करने की कोशिश करता है बेवकूफ बना के. इंडियन वॉज अ स्वेयर वर्ड फॉर अस. इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तुम्हें. इंडियंस मीन्स अनसिविलाइज्ड पीपल. यही था. क्योंकि वो हमें खाली इंडियंस नहीं बुलाए. When they went to अमेरिका, वहां नाम दिया रेड इंडियंस. क्या नाम दिया उनके लोगों को? रेड इंडियंस. वहां इंडियंस कैसे पहुंच गए मेरे दोस्तों, बताओ तो. अमेरिका में इंडियंस कैसे हैं? क्या बात कर रहे हो? हम लोग वहां गए हुए हैं, हम लोग का नाम है वहां रेड इंडियंस. द नेटिव पॉपुलेशन. यहाँ के नेटिव पॉपुलेशन जो था उसको क्या कहा उन्होंने? इंडियंस. जहां जाते थे ये लोग, वहां के नेटिव्स को क्या बुलाते थे? इंडियंस. मीन्स अनसिविलाइज्ड पीपल. एंड दे थॉट दे वर सिविलाइज्ड बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ्स. सद्बुद्धि दे उनको परमात्मा. Okay. He named the place San Salvador and its people, ITS. देखना ITS है ना? Its people. उस island के लोग, its people. My people, I के लोग, my people. You के लोग, your people. और it के लोग. तो it क्या है? San Salvador, the island, it. तो its people, Indians. He called its people Indians. He named its people Indians. देखना, name is a verb here. He named it San Salvador. Name is a verb. He named it. He named it San Salvador. And its people, Indians. Next, from there, next, they sailed to Cuba. They sailed to Cuba. Columbus thought he was in China or Japan. When he reached Cuba, what did he think? People had already been to China and Japan, going east. When he reached Cuba, he thought he was in China or Japan. क्या इससे पता चल रहा बेटा? आप सोचो. I'll give you an analogy. You are going to Delhi from Bihar with your family, and you have a little child in your family, let's say 5 years old. Your bus or your train reaches Patna or Banaras, all right, and your nephew says, Delhi pahunch gaye, Delhi pahunch gaye. What does it show? That the child has no idea how far Delhi is, right? The child is ignorant about the distance between Bihar Sharif and Delhi. Patna पहुंचा 2-3 घंटे लगे. दिल्ली पहुंच गए दिल्ली ना. It means the child has no idea how long it will take to get to Delhi. Ignorance. This guy reached Cuba and thought he was in China or Japan. It means he had no idea how far China or Japan would be if you go west. If you go east, fine. But if you go west, how far China or Japan would be, he had no idea. He had no idea of the size of the universe, of the earth. उसको ये नहीं पता था कि धरती कितनी बड़ी है, कि इधर से जाएंगे तो कितना दूर पड़ेगा. Next line. The world was a lot bigger than he thought. उसको लगा पहुंच गया क्यूबा, जापान पहुंच गया, चाइना पहुंच गया. अगर आप क्यूबा देखोगे on the map, okay, global earth, from San Salvador to Cuba, and keep going west. West चलते चलो ऐसे घूम के, okay? China and Japan are very far. और उसको लगा पहुंच गया. It means he had no idea how big this world was. The world was a lot bigger than he thought. The world was a lot bigger than he thought. Okay. अब यहाँ पर बॉस को देख करके कई टीचर्स और स्टूडेंट्स माथा पीटने लगेंगे. दुनिया थी
दुनिया है, ठीक है। उनको बचपन से ये कंफ्यूजन डाला जाता है, टीचर स्टूडेंट सब। मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, वाज इन कॉलेज, वेयर टीचर्स प्रोफेसर्स इन द क्लास गॉट कंफ्यूज्ड बिटवीन इज एंड वाज। देखा क्या बात है, आई वाज सिटिंग देयर, आई वाज सो shocked that the teacher with the students were confused together with the students, you know. I thought वो आसानी से explain कर देगा, वो भी वैसे ही confused हो रहा है कि was is. Hi, if you're talking about past, can you use is? तो उस समय की बात हम बता रहे हैं कि उसको लगता था ना जितना दुनिया बड़ा है, उससे ज्यादा दुनिया बड़ा है, ठीक है। ये है हमारे लिए, लेकिन उसको जितना बड़ा लगता था उससे दुनिया ज्यादा बड़ी थी, उसको पता नहीं था दुनिया कितनी बड़ी थी, ठीक है। तो ये पास्ट की बात करें, हम बोलेंगे तुमको नहीं पता दुनिया कितनी बड़ी है, अरबी की बात हो रही है। हमारे एंसेस्टर्स को नहीं पता था दुनिया कितनी बड़ी है, बोलेंगे हिंदी में, कोई बात नहीं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थी, ओके, वाज। आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट नो हाउ बिग द अर्थ वाज, ओके, गॉट इट। सीधी सी बात, आवर एंसेस्टर्स डिडंट नो, राइट, हाउ बिग द अर्थ वाज। और यहां पर एकदम कोई टेंशन नहीं, वॉज ही बोलना है इंग्लिश में, यही करेक्ट वर्ब है, इज नहीं बोल सकते, कोई कनेक्शन ही नहीं बनेगा, ओके। इज रेफर्स टू द प्रेजेंट टेंस। आप प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे, जब आप कह रहे हैं आवर एंसेस्टर्स डिडंट नो, आप प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे, क्यों यूज यूज इज यूज करेंगे? इट्स सच एन इजी आइडिया, easy to understand, and still, so the world was a lot bigger than he thought. जितना उसने सोचा था दुनिया उससे बहुत बड़ी थी। अब आप किसी को बोलना चाहते हो, हम जितना सोचे थे ना तुम उससे ज्यादा बेवकूफ हो। यू आर a lot more foolish than I thought or than I think, either, जो आप बोलना चाहे कोई दिक्कत नहीं है। You have been talking to a girl, okay, online, but she has not shown her face to you. And then you guys decided to meet, or she decided to send a photo. तो तस्वीर देखने के बाद या मिलने के बाद आप उसको बोलते हैं हम जितना सोचे थे ना तुम मुझसे बहुत ज्यादा सुंदर हो, ऐसे ही बोल के फ्लर्ट करते हैं ना, राइट? क्या बोलेंगे आप? यू आर अ लॉट मोर ब्यूटिफुल देन आई थॉट। हमको जितना लगा था, हम जितना सोचे थे, तुम उससे ज्यादा सुंदर हो यार। You are a lot more beautiful than I thought. And you're teaching a child, और आप फ्रस्ट्रेट हो गए उसको समझाते समझाते, अब बोले हम जितना सोचे थे ना कि तुम बेवकूफ हो, तुम मुझसे ज्यादा हो यार, नहीं पढ़ा पाएंगे हम तुमको। You are a lot sillier, okay, than I, a lot more stupid than I thought. हालांकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए स्टूडेंट के बारे में, कितना भी फ्रस्ट्रेट हो जाए आप, स्पेशली व्हेन योर स्टूडेंट इज अ चाइल्ड। ग्रोन अप है तो दे देंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा देर तक गुस्सा रहेगा, फिर वो हैंडल कर लेगा। बट व्हेन यू क्रिटिसाइज यंग किड्स लाइक दिस, then these things damage young kids, you know. So teachers who teach young kids need to be more sensitive. अरे ग्रोन अप्स को तो गाली देके तो थप्पड़ लगा भी देंगे, क्या ही हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा चार लड़का लेके आएगा पीट के जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा, डैमेज नहीं होगा उसका कुछ। but you can damage permanently, you know, a child who is young and you say such things about them। किसी को तुमने बोल दिया तुमसे ना होगा, वो सच में दिल पे ले सकता है छोटा बच्चा कि हम नहीं है इस लायक। So we need to be more sensitive when we are teaching young kids. Guys, the world was a lot bigger than he thought. So I challenged, Asim to play chess. Okay. And then I realized his game and I say, Asim, you are much better than I thought. Okay. You're much better than I thought. Then, unfortunately, then after reaching Cuba, unfortunately, near Haiti, the Santa Maria hit rocks. Santa Maria hit rocks.
संता मरिया किस से टकरा गया? चट्टान से टकरा गया। तो संता मरिया हिट रॉक। हिंदी में आप बोल रहे चट्टान से टकरा गया, से के लिए कौन सा वर्ड है यहाँ पे? हिट मतलब टकराना। नियर हेटी मतलब हेटी के पास। रॉक्स का एस है, वो हो गया से। नया बैच शुरू करेंगे, उसमें बैठाएंगे तुमको हम, ताकि तुम्हें सिंगुलर प्लूरल सिखा सके हम। रॉक्स का एस जो है वो से के लिए है। ये आंसर मैं याद रखूंगा अपनी जिंदगी भर। अब याद रखना, मैंने कई कहानियां सुनाई है ना, याद है बारगर्ल सुनाया था तुम्हें? ऐसे किसी बच्चे ने बोला था, आज से एक नई कहानी मिली। मेरे स्टूडेंट्स मुझे नए नए एक्सपीरियंस देते हैं। सुनो रानी, याद रखना, एस जो था रॉक्स में, उसका मतलब हुआ से। ओ माय गॉड। कुछ तो बोलना था तुम्हें, हाँ, एस निकाल लिया तुमने वहां से। शी इज अ स्मार्ट गर्ल, लेकिन इंग्लिश में हो जाता है। आप ऐसे उठपटांग जवाब दे सकते हैं जिसका अंदाजा नहीं है। आप अभी समझ रही हैं आपने कितना उठपटांग अपने आप को साबित किया है? रॉक्स का एस को आपने बता दिया से, जबकि वो प्लूरल है रॉक का। ओके, इट हिट रॉक्स, संता मरिया हिट रॉक्स। ओके। बेटा, वर्ब कुछ ऐसे होते हैं इंग्लिश में जिसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, जिसके बाद डायरेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं। आई ईट मैंगोज। ईट वर्ब, मैंगोज ए नाउन। नाउन ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? नाउन, या तो नाउन के बराबर जो प्रोनाउन है। आई लाइक मैंगोज, आई लाइक यू। यू इज अ प्रोनाउन, नाउन इक्विवेलेंट है ना। आई लाइक स्विमिंग, नाउन इक्विवेलेंट है स्विमिंग। आईएनजी फॉर्म जो वर्ब का होता है वो क्या होता है? जेरन। जेरन क्या होता है? नाउन इक्विवेलेंट। सुना है? नहीं सुना है तो सुन लो। वर्ब फोर, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब is noun equivalent, is noun equivalent. It is equal to a noun. It is called gerund in English. V4. I like swimming, I like mangoes, I like you. तीनों में, तीनों के तीनों क्या है? नाउन इक्विवेलेंट। एक तो नाउन ही है मैंगोज। यू नाउन इक्विवेलेंट है बिकॉज इट्स अ प्रोनाउन। प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, तो बराबर होगा तभी तो। आई लाइक स्विमिंग, स्विमिंग इज अ V4 विच इज इक्वल टू अ नाउन। तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? नाउन या नाउन इक्विवेलेंट। आई गो टू स्कूल में सब लोग बोलेंगे स्कूल नाउन है, स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ऐसा बोल देंगे लोग। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के डायरेक्ट बाद आता है, उसके बीच में कुछ नहीं होता। नाउन और वर्ब, वर्ब और नाउन के बीच कुछ नहीं होता, वो ऑब्जेक्ट होता है, एक्सेप्शन केस छोड़ के। जैसे आई गेव मनी, आई गेव, ही गेव क्लोथ्स, आई गेव मनी। तो यहां पर ऑब्जेक्ट मिला आपको, मनी एंड क्लोथ्स। ऑलराइट। आई स्कोल्डेड हिम, आई स्कोल्डेड हिम। तो हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। आई स्कोल्डेड हिम। तो ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, याद रखना, ये नाउन इक्विवेलेंट। आई एम ट्राइंग टू टीच यू दिस कॉन्सेप्ट। मैं बता, मैं कभी चैप्टर लेके नहीं आता कि आज ये चैप्टर पढ़ाई होगी। कॉन्टेक्स्ट में जो आ गया वो चला जाएगा दिमाग में और आसानी से आ जाएगा। क्या सुना तुमने? संता मरिया हिट रॉक्स। संता मरिया, संता मरिया किस चीज से टकरा गया? चट्टान से टकरा गया। मेरी बाइक पेड़ से टकरा गई। माई बाइक हिट अ ट्री। माई बाइक हिट अ ट्री। से कहाँ है? नहीं है ना। जो लोग हिंदी से इंग्लिश करेंगे वो से ढूंढते रहेंगे। तो अब सुनो,
There are two types of verbs. One, which will take an object, and two, which will not take an object. Let me give an example. I'm sleeping. आगे बोलो कोई noun. You can't. Sleep नहीं लेगा object. आ सकता है क्या? सोच के देखो. I'm sleeping. Okay. I'm running. He ran. He ran 2 kilometers. क्या 2 kilometers object है? बताता हूं. He ran. Okay. He ran. Object होगा who. Object होगा what. जैसे I ate what? Mangoes. I saw what? A bird. I saw who? I saw my teacher. So आपको पता है who और what nouns होते हैं. Who और what क्या होते हैं? और when, where, how ये सब क्या होते हैं? Adverb. Okay. How much adjective होता है. How much क्या होता है? Please understand. बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं. मैंने आज तक अपने कोर्स में ये बात अभी तक अपने टीचिंग करियर में नहीं बोली है. मेरा पढ़ाई ऐसा ही है. मैं हर दिन इवॉल्व कर रहा हूं एज ए टीचर. ठीक है. इसीलिए मेरे साथ पढ़ने का मतलब है आपको मेरी बात बैठ के स्टोरी वाला इंग्लिश क्लासेस मैंने बताया ना आपको. इसलिए मैंने नाम सोचा है ये कि मैं कुछ पढ़ाता ही नहीं सोच कर कि ये पढ़ाना है आज. सुनो. आप बोलो व्हाट. जवाब दो. ए शर्ट. व्हाट. जवाब दो. मेरा जवाब दो. अपना जवाब नहीं दे सकता. अच्छा. व्हाट. ए कंप्यूटर. सब क्या है जवाब में? क्या आ रहा है? हु. आई. यू. माई ब्रदर. माई टीचर. ये सब क्या है? नाउन. हु. प्राइम मिनिस्टर. हु. प्रिंसिपल. हु. ए बॉय. राइट. तो ये सब क्या है? नाउन्स. अब बोलो. वेयर. इन पटना. वेयर. हियर. वेयर. देयर. वेयर. एट होम. ये सब क्या है? एडवर्ब. हाउ मच. 4 liters. Okay. How many? 4. How many? 400. How many? 40 adjectives. Got it? तो बेटा ऑब्जेक्ट कौन से क्वेश्चन से पता चलेगा बेटा? क्योंकि ऑब्जेक्ट नाउन होता है. नाउन तो बस यही 2 क्वेश्चन से पता चलते हैं. एनी प्रॉब्लम्स? तो बताओ. ही वेंट टू स्कूल. क्या स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया इसका? क्योंकि जवाब है ही वेंट. कहाँ? वेयर. तो टू स्कूल. तो ये टू स्कूल क्या है बेटा? एडवर्ब. एडवर्ब. टू स्कूल. वेयर. 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 व्हेन. हाउ. तीनों क्या होता है बेटा? एडवर्ब. वेयर. व्हेन. हाउ. ये तीनों क्या होते हैं? वेयर होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस. व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम. एंड हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर. ओके. लेट्स कंटिन्यू. नियर संता मरिया. नियर है थी संता मरिया हिट रॉक्स. तो ऐसे वर्ब्स जिनके बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आते हैं. ऑब्जेक्ट आएंगे. मैंने अपनी बेटी को डांटा. आई स्कोल्डेड माई डॉटर. को के लिए कोई वर्ड नहीं आया बेटा. पता है क्यों? स्कोल्ड भी हिट के जैसा है. स्कोल्ड भी. यानी अगर कुछ वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिखे तो आप समझ जाओ वो एक कैटेगरी का है. वर्ब 2 कैटेगरी के हो सकते हैं आपसे.
पहले एक कैटेगरी बताया था बी वर्ब एंड अदर वर्ब्स, राइट? वो था किसी और एंगल से, उसके पोजीशन फॉर्म के तरीके से। अब बोल रहा हूँ वर्ब दो तरीके का होता है। कौन सा वर्ब? एक ऑब्जेक्ट वाला वर्ब, एक विदाउट ऑब्जेक्ट वाला वर्ब। वो तो देख के पता चल जाएगा, कहाँ सब्जेक्ट या वर्ब के बाद क्या जगह, कहाँ देखोगे तो पता चलेगा। वर्ब के बाद की पोजीशन को देखोगे, इफ यू सी ए नाउन देयर यू नो इट इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट। अब बताओ, नेम जो वर्ब आया था बेटा, कोलंबस नेम्ड इट सैन सल्वाडोर, ये हिट की तरह है कि नहीं? दो वर्ब लेते बेटा, गो, गो के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, और एक वर्ब लिया लाइक, लाइक के बाद आता है जैसे आई लाइक मैंगोज। तो दो वर्ब कैटेगरी बनाते हैं, एक गो की कैटेगरी बनाते हैं और एक लाइक की कैटेगरी बनाते हैं। अब मुझे बताओ ये नेम किस कैटेगरी में जाएगा बेटा? लाइक के कैटेगरी में जा रहा है ना, क्योंकि इसके बाद है ही नेम्ड इट, ही नेम्ड इट। तो किस कैटेगरी में गया बेटा? लाइक के कैटेगरी में। अब बताओ, लाइक और नेम में कोई सिमिलरिटी है कोई आम आदमी के लिए? एक आम आदमी के लिए जो इंग्लिश नॉर्मली सीख रहा है किसी जगह बैठ के, उसको लाइक और नेम में कोई सिमिलरिटी दिखेगा? लेकिन हम लोग को दिख रहा है, क्या है कि दोनों एक कैटेगरी के वर्ब हैं, कि दोनों के बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। हम लोग के एक सर थे, हम लोगों ने उनका नाम रख दिया था पांडे सर। वी हैड अ टीचर, वी नेम्ड हिम पांडे सर, वी नेम्ड हिम, है ना, वी कॉल्ड हिम पांडे सर। ठीक है, कॉल भी किस कैटेगरी का वर्ब हो गया बेटा? लाइक का। तो आज से अपने दिमाग में ये दो कैटेगरी चलाते रहोगे। बेग भी आ गया बेटा, आप गौर करने लगे हो? बेग भी आ गया, किस कैटेगरी में आ गया बेटा? लाइक वाले कैटेगरी में आ गया। नाम नहीं दे रहा अभी, सिर्फ दिमाग यूज करने के लिए, प्रेशर कोई नहीं, इसलिए कैटेगरी का नाम नहीं बता रहे। कैटेगरी का नाम है, लेकिन मैंने आपको नाम की जगह दो कॉमन वर्ब्स दिए, एक लाइक और एक गो। स्लीप किस में ले जाओगे? गो वाले में ले जाओगे, देयर इज नो ऑब्जेक्ट। तो आज से दो कैटेगरी वर्ब्स। अभी तुम एलिमेंट्री कोर्स में यूनिट 7 में हो। You are going to stay here with me for 5 more units, which will take nearly 3 months. Okay? 3 more months you are going to be with me. So 3 महीने ये कैटेगरी अगर चलाओगे तुम अपने दिमाग में, you guys are going to learn so much. कोई वजह होती है कि प्री इंटरमीडिएट क्लास में लड़के मेरे पे प्रेशर डालते, शुरू करो सर प्लीज। अभी इंटरमीडिएट क्लास में there were only 6-7 students, so I was not very keen because I have to earn money as well now from my teaching for my family. You see, I can't afford to just teach and not earn money, because this is the only source of income for me. I do not have another source of income. So I have to think about earning money as well. So the students wanted me to start the intermediate level class, the 3rd level class, but I wasn't very keen on it. But when they insisted, उनको पैसा देना पड़ेगा, 7-7 हजार रुपया देना पड़ सकता था. Okay? But I decided not to start that way. I said, okay, I'll teach 2 days a week, because I don't have time. I don't want to commit because I have to earn money. So I will start a class where I will have more students. तो वो क्लास शुरू करने का मतलब साल भर के लिए बिजी हो जाना, 1.5 घंटे के लिए. So I didn't commit for everyday class, 6 days a week class like I have for you. तो पॉइंट ये है कि कुछ चेंज होता है बच्चों में, तभी वो दूसरी बार खुद से पैसा देने के लिए व्याकुल रहते हैं कि लीजिए पैसा पढ़ाइए. फर्स्ट टाइम तो दे आस्क मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा. नॉट एवरीबॉडी इज लाइक रानी. रानी के पेड मी मनी 5,000 एंड स्टार्टेड स्टडिंग. राइट रानी? और कौन है उस कैटेगरी में यहाँ पे? आपके भाई चाचा आकर पैसा दे गए. और भी ऐसे लोग होते हैं जो मतलब आए और पैसा दे के पढ़ने लगे. सम पीपल जस्ट दे से सर 2 इंस्टॉलमेंट्स, ओके कोई सवाल नहीं. बट अ लॉट ऑफ पीपल आस्क क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. क्या होगा, कैसे पढ़ाएंगे, सीख जाएंगे, टेंस पढ़ाइएगा, कहाँ से शुरू करिएगा, माथा खराब. कोई जवाब नहीं होता मेरे पास. कौन सी बोले कि तुमको उस रास्ता से ले जाएंगे जिधर से तुम कभी गए नहीं हो? कौन सी बताए कौन पहले आएगा? तुमको पता है कौन पहले आएगा? अरे जिधर से गए उधर ना आएगा कि पहले ही वाला आएगा. तुमको इस रास्ते से ले जाएंगे जहां तुम कभी गए ही नहीं हो, तो उसमें कौन पहले आएगा कैसे पता चले? हाँ, दूर दूर से प्रेजेंट सिंपल आया पहले, समझ में आया? यूनिट 1 2 3 गाइस. देन वी हैड देयर, यूनिट 4. देन वी हैड कैन, यूनिट 5. लेकिन ऐसे बोले कि आपको हम प्रेजेंट सिंपल पढ़ाएंगे 1.5 महीने 2 महीने, तो लोग कहेगा कौन जी 1.5 2 महीना प्रेजेंट सिंपल?
हम ग्रामर नहीं सीखने आ रहे, कितना डिटेल में ले जाइएगा। आपको कब लगा कि हम प्रेजेंट सिंपल पढ़ा रहे? खाली रोज कहानी सुनाते थे, कभी शिल्पा शेट्टी, तो कभी जेमी कलम, तो कभी बाबर अली, कभी लिसा पार्सन्स, स्टोरी वाला इंग्लिश क्लासेस, राइट? बेनवे, you see, Oprah Winfrey, and we keep learning, keep learning. So it is a class where people do subconscious acquisition. I don't make it obvious for them what I'm teaching. They just need to listen and keep learning, keep growing. क्योंकि आपको नहीं पता, आपको लगता है कि वो चैप्टर की वजह से आप इंग्लिश बोलते हैं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, जिसको स्टीफन क्रैशन ने 1980s में क्लियर कर दिया कि कोई वो ग्रामर रूल की वजह से नहीं सीखता। अगर कोई सीखता है क्लास में बैठ के, तो अपने टीचर के कम्युनिकेशन से सीखता है। आपके यहाँ ना टीचर्स हिंदी बोल के पढ़ाते हैं, बट इन मेनी क्लासेस अब्रॉड, ओके, teachers speak English and teach English. And let me tell you, there are classes in our students' mother tongue in every country. If you go to Mexico, there are teachers who speak Spanish and teach English. Okay? They communicate with the students in Spanish and teach English. If you go to Germany, there are classes where the teachers speak German and teach English. Those classes are not very useful. The students never learn so much because the communication with the students is in their mother tongue, not in the target language. Stephen Krashen clearly says the teacher has to communicate with the students in the target language. And it is this communication that helps them. The students think it is the lesson that the teacher is teaching, but in reality, it is the communication, not the lesson. And that's why I say, whether I'm talking about the English grammar rules or I'm talking about just telling you a joke, doesn't matter. You will learn equal amount of English if you're listening to me carefully. So what the topic is doesn't matter as long as you find it interesting enough. Whether it is about gerund or what, it doesn't matter. So it's the communication that helps you. हाँ, तो यही सबसे बड़ा अजीब सवाल पूछा है कि हमको अगर इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो हम क्या खा करके सोचे कि हम इंग्लिश पढ़ाना शुरू करेंगे। ये सपना मेरे को क्यों आया था कि हम इंग्लिश पढ़ाना शुरू करें। Go to any college classes here in Bihar Sheikh. Go to any college, okay? I'm talking about graduation and post-graduation degrees. 90% of students sitting there can't tell you the difference between the present simple, present continuous, present perfect properly. 90% of the students doing graduation don't have any idea of tense. And they're doing graduation in English. I was there. I have seen it with my own eyes. I'm not telling you some hearsay. I have experienced this firsthand. I was there in the class. And those guys, oh my God, their ego, I'm doing graduation in English. हाँ, ये सब tense, ये सब grammar है, उतना थोड़ा नहीं। हर चीज का जवाब है उनके पास। ये ग्रामर है, इसलिए नहीं आ रहा है हमको क्योंकि हम ग्रामर नहीं पढ़े, लेकिन हम ग्रेजुएशन करेंगे। हमको समझ नहीं है कि हम कैसे दो सेंटेंस के बीच का फर्क समझे, लेकिन हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं इंग्लिश में। शेक्सपियर की बात कर रहे हैं, कॉलरिज की बात कर रहे हैं हम हिंदी में। तो तू हिंदी पढ़ लेता भाई, हिंदी लिटरेचर लेता, रविदास और कबीर की बात कर लेते। क्या जरूरत थी शेक्सपियर और कॉलरिज की बात करना? हिंदी में ही करना है तो कौन तेरे मौसा लगते हैं वो लोग? हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है। देन लाइक आई सेड, अरे वो फिर कोई ग्रामर पढ़ लिया अच्छे से, ठीक, ग्रेजुएशन कर लिया। आई टोल्ड यू अबाउट दैट गाय आई मेट इन द मॉल एंड ही वाज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स। साला इंटरव्यूअर हुआ, इंग्लिश में बोले लगल को। तो हम बोले कि सर हम हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हैं। तो बोला हो कि तो तू ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश में, तो हिंदी में क्या कंफर्टेबल है? तो हम बोले सर हम स्पोकन इंग्लिश नहीं ना किए हैं। साला इतना छोटा सा बात उसको नहीं समझ में आ रहा था। ये बोलता है वो लड़का, कह रहा है कि इतना छोटा सा बात उसको नहीं समझ में आ रहा है कि हम स्पोकन इंग्लिश नहीं किए हैं। मतलब हर आदमी जो इंग्लिश बोल रहा है वो किस वजह से बोल रहा है? स्पोकन इंग्लिश कोर्स करके। अरे यार, ये समझ लो कि बीमार पड़ने पे इंजेक्शन लगवा रहे हो तुम कि बच जाओ, मरो नहीं। हाँ कि ना? फिर बाद में अच्छा खाना खा के तंदुरुस्त होना पड़ेगा। पॉइंट ये है दैट यू कम टू एन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास, वेदर स्पोकन इंग्लिश क्लास और व्हाटएवर, जस्ट टू गेट योर बेसिक्स राइट।
just to get your basics right. And after that, you need to spend a lot of time listening and practicing so that you can be fluent. And that idiot said, हाँ graduation है, English में graduation के लिए वो भी वैसी था, one of those, you know, who couldn't understand English. वो बोल नहीं पाए English, उसका डिफेंस क्या है, स्पोकन इंग्लिश कोर्स नहीं किए थे बस. तो बेटा तुम ग्रेजुएशन कैसे कर लिए? शेक्सपियर क्या क्या बोला, कॉलरिज क्या क्या बोला, उसका क्रिटिक क्या क्या बोला, तुमको कैसे पता चल गया? तुमको इंग्लिश नहीं समझ में आती बोलना लिखना तो? जवाब है स्पोकन इंग्लिश कोर्स नहीं किया. Everybody has a defense. Everybody has an answer. Stupid is most stupid answer, but they have an answer. And they don't realize. चलो, hit rocks. तो आज से verb कितने categories बेटा? So there will be an object after the verb and there will be no object. तो keep learning. अब verb के बाद की भी करो, एक stage था. I was only asking you to look at the form of the verb. Look, I was asking you to look at the form of the verb. Subject है. सब्जेक्ट के बाद वर्ब V1 है, एस लग रहा है, एस नहीं लग रहा है, डजंट लग रहा है, ये सब पर फोकस करवा रहे थे. आज इतने दिन के बाद पहली बार मैंने कहा वर्ब के बाद गौर करो क्या है, ऑब्जेक्ट है या नहीं है. और अगर किसी दूसरे क्लास में जाते तो पहले दिन वो SVO पढ़ा देते, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. जबकि इतने दिन मैंने आपको पकने दिया कि देखो कितने तरह के वर्ब्स आपके सामने आ रहे हैं. ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं समझ में आता लोगों को. कई क्लास में जाओगे और वो आई गो टू स्कूल में टू स्कूल को ऑब्जेक्ट बोल देंगे. आई स्लीप 5 आवर्स और 5 आवर्स को क्या बोल देंगे, वो ऑब्जेक्ट बोल देंगे. Fine. I hope you guys have benefited from this lesson a little bit. Read the text. 20% is conscious learning. आज का conscious learning था verb के दो categories mainly. And the world was a lot bigger than he thought. ये एक conscious learning था जो आप बता सकते हैं कि सर ने इस दिन पढ़ाया. बाकी शुरू से जो हम लोग अब तक पढ़ते हैं, या go to see, no article, the Santa, the Nina, the Maria, you know, ये these are conscious learning messages. ये conscious learning हुई है आपकी, मतलब इसके बारे में आप बोल सकते हैं कि इस दिन आपने ये पढ़ाया. बाकी बहुत सी चीजें 80% इसके अलावे सबकॉन्शियस लर्निंग हुई आपकी, जो आपको पता नहीं चला कि आपने क्या सीखा है, बस सीखा है कुछ. Please go home and revise. Read the same text. Make similar sentences. Read the same text and make similar sentences. Please change the culture of the class. It is in your hands, guys. I'll see you. Bye-bye. Sahil, I need to talk to you. Bye-bye.